Okay, so we are going for group task, right? Today is the group task, and next we will go for then group discussion. For today is a group task, right? What is group task? I told you many times earlier also. Group task is the task of the group. We all are a group. We are a team member. मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूंगा छोटी सी और तुमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को देना है. And when you give the solution, I'm going to check your attitude. I'm going to check your personality as employee. So you assume yourself employee of organization in which you want to join and give the solution accordingly. So why group task is done? There are two reasons for group task. Reason number one, I want to check whether you can communicate or not. बात कर सकते हो कि नहीं. Number two, क्या तुम्हारे दिमाग में innovative ideas आते हैं. Number three, आपका attitude क्या है, आपका thoughts process कैसा है, how you will behave in a particular situation. So मैंने आपको context दिया and you have to speak about that context. So think innovative and try to give really good solution. Do not move in a crowd. Don't say which everybody is saying the same thing and you are also following. Don't do that. Think, use your brain and try to give me the solution. It is very interesting actually. These things are very interesting. If you think, then it is very interesting. And this is one solution part. Second part is how you talk to others. No, you are a team member, you know, and should be reflected like you are a team member. When you listen somebody saying, okay, Rahul, what you are saying, I agree. But Rahul, why don't you think we can do this? We can also do this, Rahul. What do you say? Something like this. And if you do not agree, okay, Apurv, whatever you are saying, I don't agree to that. Lekin Apurv, don't you think this topic or the problem is something different? You are talking something different. So let's come back and let's talk something related to the topic. That kind of thing. So this is the common part. Then in the conclusion, you have to conclude what others said. You said, okay, we had a discussion and many points came up. And now if I summarize all the points and give the crux of the discussion, then the crux is this. And I believe this can be the solution. So introduction is nothing but, good evening friends, my name is this, and I'm happy that I am initiating the discussion. And friends, let me introduce you to all of you to the topic. And do not read the topic from the pages, just to speak. You have already understood, you speak the topic and then give some perspective to this. So friend, the topic is, I think, very thought-provoking topic, and in my opinion, I think we should go like this. दो चार लाइन बोली फिर बोलो, now I open the house for the discussion. That is 2 minutes introduction to all of you. After that 10 minutes house will be open for the discussion, and then after 10 minutes 1 minute each will be the conclusion part. So you guys are to conclude within 1 minute. That is the last part, has to be like that. And you will conclude for the entire group. That is how it is to be. Believe me, it is very, very interesting. There is a reason every night I come here and discuss with you. Group discussion, group tasks are really interesting. And you get lot of confidence through this. Your communication improves, your thought process improves, and I'm learning every day from you guys. When you speak, my mind is also working. I'm listening to you. Your ideas also I'm listening, and it improves every day. So think of this, and there should be transformation in your communication skill, in your thinking, in your personality with passage of time. That has to be there. So let's now initiate this process and let's see how it goes. Are we done with this? Any question from your side to me? Any question from your side to me? Can we initiate now, guys? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so here's a trouble for you for the night. So please jot it down, pen it down. What is the problem I'm brought for you? Okay, your boss is a very good person. Your boss is a good person, but he loses his temper easily. But he loses his temper easily. गुस्सा आ जाता है उसको आसानी से. Your boss is a good person, but he loses his temper easily. All his subordinates want to go against him to the top management. All his subordinates want to go to the top management against him. They are asking you to accompany. They are asking you to accompany.
you should do. What you should do. So I repeat it once again, and the moment repetition is over, we initiate the discussion. Your boss is a good person, but he loses his temper easily. All his subordinates are going against him to the top management, and they're also asking you to accompany. They're asking you also to accompany. What you should do. What you should do. Please keep all of you mute. Okay, I think now we can initiate, and I start from Amog. Good evening, friends. I am glad to initiate the topic, which is we are here for discussion, and our GT topic is we are working in company, and our boss is a good person, but he loses his temper, and our colleagues wants to go against him to the management, and they want accompany me also. So what should I do? And I think that we should think about that if we will lose a temper in any company, then we can't survive anywhere, and every time their ups and downs come, and if we should be patient, and we should face every problem tactically, and if it will they will lose and his temper, and scold their subordinates, then he will also lose concentration on their work, and then company can loss. So I think that there should be some patient, and we can talk to the boss, but if he will not be able to do that their correction, then we should go to the top management. And I think that your everyone's point will be more valuable, so I am opening to the open discussion. Apur. Apur, you are unmute yourself. I'm sorry for that, everyone. So once again, good evening. And the problem statement for today's group task is that my boss, who is a good person, the problem with him that he loses his temper very easily, and all the subordinates are going against him and are seeking my approval for that too. And which stands in front of me is, what should I do in that case? So I think since we are saying that he's a good person, on a personal level, I don't have any problem with that problem with him. And also, if we see this in a overall way, it can be a huge problem, because boss is the one who qualifies, who is the eligible one, who evaluates your work and progress, and finally affects it. So I think first of all we should ask the person who is approaching me that what is the certain event which led to such development of emotions for the boss, and then in that way we should progress for the solution. So I won't take much time now, and just open the discussion for everyone. Thank you. Rahul. Good evening, everyone. My name is Rahul Best. I am glad to be a part of this group task. The task given to us is our boss, which is a good man,
which is a good man. He is a good man, but he loses his temper easily. All his subordinates want to go against him and the top management, but they ask me to join with them. What do I do? So firstly, we have to, in my opinion, we have to discuss with them what's the problem, is whether the problem related to us or them, whether because if they have done something wrong and the boss is having their high temper, so it's not the boss problem, it's their problem. So we have to discuss direct to them, and we have to discuss because of that also, that they don't do anything wrong discussion directly and go to directly to the management. So we have to discuss with them, and we have to try to convince them what's the problem. And the next step, we have to talk to the boss, because he is a good man, so we can talk to him about his high temper, and after that we can solve the problem calmly. So now I invite all of you to give your valuable suggestions in this task. Thank you. Okay, now I think we can go with Shravan. Good evening, friends. Myself, Shravan Kumar Yadav. Now I take initiative to start the discussion on the topic. Suppose my boss is a good person where I am working, and he temporarily tempered on some topic, and someone from that organization go against him to the top management. This is a topic that is too interesting for me, because I am working professional. And friends, in that situation, first of all, we should understand the situation, why our boss is so easily tempered, and we should also discuss with him. If they are tempered, in that situation, we can cool down, we can keep patience, and then after some time we can sit with him or her, and we can discuss with him that what are the problems and how we can come out from that, what are the conclusion, what are the solutions for that problems. And that is a common, someone is also is superior for him. So there are also so pressurized on him from the top management regarding target, etc., and they pressurize to us. So so we should, first of all, before going to the top management, we should discuss with him. We should come out with good solution of that problem. So we should not go, and we should, because if we will go, then our relationship with that superior will be bad. So if we want to work with them for the longer time, so we should not go immediately to the top management. First, we should talk, and we should take time. Then, if solution is not come out, then we can go to the top management. Okay, now 2 minutes is over, Shravan. So now I open to the house for the further discussion. Anand. Anand. Good evening, everyone. My name is Anand Kumar, and I am glad to initiate this group discussion, group task. And the task here given for the discussion is we are working in a company, and our boss is a very good person, and he gets easily tempered. Okay, so our subordinates, our colleagues are saying to me that we should go against him and to the top management. So they basically want my company. So what a step we should do. So according to me, I think that we are working in a company where we spend about one third time of a day, like 8 hours. So their environment should be neat and clean. We should work peacefully, because if we get if anyone is getting tempered and shouting at me, so I will get disturbed and I cannot focus on the work. So boss is our boss, so he's me. I have to report him, and he will take the follow-up. So I have to report him. So we are working as a family there. So
we should think, first of all, we should know about in which scenario he is getting tempered. First of all, we should know about the reasons. What are the reasons? Why he is getting tempered? If is it from his side, there is some mistake. What recipe is demanding, we are not fulfilling that. So in this, we can work on ourselves also. And if there is some mistake of him, so we can discuss at this some other time, like when he's cool, like we can arrange some dinner let's in the outside of the organization, and we can discuss what are the reasons, so why you are getting tempered, what is the reasons. So we are as a family, we can discuss. So in this way we can, first of all, we will try to identify the solutions. So this is from my side, and I'm I will be happy to listen your also solutions. Thank you. Okay, now I think Karan can. So, good evening, friends. So today our topic for the group task is that our boss is a good person, and but he loses his temper. So our subordinates have asked me to join them so that to go against him in the top in the top management. So in that condition, I would say that we can't judge a person by a single trait that he is losing his temper. Uh, Given that he's a good person, we should firstly going to the upper management should not be a correct decision. We should either directly confront him, ask him what will be the reason, and secondly we should there can be multiple reasons, like what are the reason of like if he's getting angry or he's losing his temper. It can be either personal reason, or it can be either the pressure from the authority, higher authority above him. So and at the final, the boss is the one who will be evaluating us. So it is important for us to maintain a boss and employee relationship for a longer period, for a longer run also. So I think going to the upper management is directly is not a good idea. As a friend said, so we should have a good get together and confront him directly and see where the problem is coming, whether it is coming from the employer side or it is coming from the boss side. So I think this is my point of view. And going to the direct management is not good, will not Okay. be a good. So I open the house for others. Ravi? Good evening, friends. I am happy to initiate the task. To today, give the task to resolve a. Your boss is good person, but he loses temperature easily. All his subordinate going against to top management against him, and asking you to accompany what should at that situation what should do by employer that are subordinate to go there. Firstly, we are not go to the top management level to direct raise the issue about the temper uh, loses by the our boss. Firstly, we can talk the subordinate how can situation is created as there that time the boss is a user at what problem created there. The problem by the side of boss and the other is the side of the by the employee. For that, we go to the boss to talk about the issue and understand the what reason to uh, what reason to the losing of a temper by the boss, and at what level that's all from my side, Shubesh? and open the house for discussion. Good evening, friends. I am Subhesh Pandey, and I am glad to participate in the group task. And today's task is our boss is a good person, but he is short-tempered, due to which all the subordinates wants to go to the top management, and which they also want me to accompany them. I think as a team we can solve this issue,
And my suggestions are, before going to the top management, first of all, we have to talk to the boss politely and tell him the consequence and the effect of their temperament to the other employees, and also talk to the subordinates to find out the special situations when he got tempered, and before going to the top management. And now I open the discussion for other friends. Okay. Now I think first round is complete. Everybody has spoken now, and now I think we can initiate the discussion. And I expect you will discuss as team and come out with some solution. And it has to be a smooth discussion since it is a group task. So you must be aware that you people are a team now. You are a part of a team, and accordingly you have to do. So proceed ahead and start discussion among you. So I Friends, would after like listening to to all of realize you, one the thing is point. clear that one thing is clear that everybody is agreeing that we have to discuss ourselves. First, the problem we have to discuss ourselves. So everybody is agreeing with that. So this is the first step, that we have to discuss ourselves. What the problem is coming from where the problem is coming from. Yeah, Rahul, I agree with you. First of all, we should discuss our with boss before going to the top management. We cannot directly go to the top management against him because we will work with him for the longer time. If we will, Yes. But We have to another thing is that maintain we our have to- relationship we with have him, to discuss because he's what the one. problem is. Because We without will knowing do the it problem, we And can't we go to also- higher authority. yes, First, we have to discuss ourselves what the problem is. Right. Because Yes, if the I problem think- is there can be from the multi- employee side, then there it's can be our multiple fault that reasons we for are their blaming our boss. I think guys, we are missing one point, that in the problem statement only we have the point that he's a good person. So Yes. that means Yeah, definitely. that there is something Right. something itching to him on a personal level probably, or on a professional level, we don't know. That's why he's losing in temper easily. And How can you be sure? Yeah, Apurv, how can you be sure that he's losing temper because of that? Do you have any idea why he's losing his temper? Anand, there can be multiple We reasons. cannot assume now. If he losing the Multiple temper. reasons we can say. Yeah, Karan, you are right. That there is multiple reasons. Yeah, Karan. For that, we will discuss to the boss. lose our loss. We will discuss to the boss what is the One point is problem. the solution is that we Anand, should let me directly speak. confront him. Anand, let me speak, Anand. But first thing is that the boss is good or bad. But for our side, we have to discuss what the problem Yes, is. boss is We good. don't- See, it is given in the How we will problem discuss? statement only that the Bad, boss but is we good. have to discuss So, ourselves what the Rahul, I problem agree is. with you. We I can't agree go with you. directly to See, the higher authority. That is correct. That is correct. We will not there go to can be the multiple top reasons. management. You are right. There can be multiple reasons why he's angry. There can be multiple Yeah. reasons. There can be like Yeah, personal yeah. reason also, or there can be like he's also been pressurized from the higher authority or the higher boss above him. Yeah, So there that can be, but it is given. We have to talk to the boss. But it is given that he is a good person. So directly going to him. So directly going to him is the main thing. I think directly going as it is given as a good person. And go directly to the boss. We should not go to alone. First, we have to discuss According to with me, them. I am just thinking that Anand. we should not go alone. That we are a group. We can go together and Yeah, we we can will go in discuss group. with him, sir. Yes, But We are working here. We are. Yeah. These people are there. Anand, These we cannot are going to the higher authority. First, we we have to cannot go to the convince them against him. so that they. Not saying that we will go to the higher authority. I am just saying that we will go together to the boss. Yeah, all of you are correct that we should not go directly to the boss. I just want to Amok, Yeah, just yeah, one second. yeah. I just want to make it more easy I to think we should get the solution. Get to the solution. We should Just not one directly go to the second. top management before going to the top management. We What's should his name? 1, 2, 3, 4, 5. cannot directly go to the top management. Directly, we should not go directly to top management. We should go to the boss. We should That is talk to them. completely But correct. if after 2 to 3 times, if he will not, their temper will not lose or it will not be correct, then what should we do? We should think. Yes. Amok, I agree with you. So friends, all are agreeing with that. He's a The nice first person. perspective, all are Why agreeing will he with will first lose his perspective temper? that we have to discuss. So we have to discuss after Yeah. that what will we do. Rahul, We have to discuss that. Yeah, Rahul. Rahul, I think we should divide our solution into 2 parts. See, one is the Yes. optimistic way, in which we go to the boss and try to discuss the solution Yes. with him. Like, what is the problem with him?
Okay, the other thing is that Apur, main problem is that. just But one second, just Apur, let complete. Just let me Apur, complete. Just one second. Just one second, Rahul. Let Yeah, just let me Apur complete. finish. And the other First, thing is, complete. the other thing Let us is that finish. if you know if the reason is beyond his control or someone else's control, if there is no problem with everyone else and the problem is within himself, then you know we should take it to some other upper level as we are talking in the problem. But if but we should first approach the optimist is going to him, talking to him, what are the I am completely agree. I am agree with you. But Apur, listen to that point. In the second case, you are saying that we will go to the higher authority. Apur, you are saying that in the second case we will go to the higher authority. We will discuss some other time. Like we will go outside. Let have the some of one have the birthday. So we will make a party. Anand is saying like we should have some get together. So that they can. Rahul, let me speak. Let me speak. I want to add to the Anand's point. Which you are forgetting. One thing is that all the employees are going to the higher authority. They are asking us to come with them. So first we have to convince them so that they don't go to the higher authority. After that we will make friendship relationship with the boss, and then we can. We are forgetting that they are going there. We have to Rahul, just think about like we are the Rahul, just listen. I want to add to the Anand's point that he said that we should have some get-togethers like with the boss so that we can know him better at the personal level, and we can see that boss, man. We can't go directly to the boss. First, we have to discuss ourselves. What's the problem? Is talking that no. After I'm saying after your everyone point, is talking that we should go and talk to him. Definitely. The After thing that, is, we if can things talk don't to work boss. out, like if things don't work out by talking only, then we should also see that it is a professional environment, and we should stick to our work. We should stick to our timelines. We should stick to our deadlines, and then I think there will be no reason that he loses his temper because we are doing our work and he is our boss. If things don't work out by talking to him, we don't have the things don't go in a south way, so we have to go to the upper management. Higher authority. Karan, we are not going to the higher authority. The subordinates are going. We have to convince them, not us. See, I agreed with your point. I'm saying that after convincing the subordinates, I'm saying that after convincing the subordinates, Apoorv is trying to tell after convincing the subordinate what is the solution. So he's trying to saying that after convincing them, so we can ask him like we can have a get together so that we can know him the personal level. That what are the problems. And after that, when the Apoorv added. See, I want to add that when the Apoorv said that like he's the one person to evaluate us. So in the long run, if we complete a task in a given time, so there won't be any chances that he will be losing his temper. But then also, if he is losing the temper, we should have another option that we should go to the higher authority because we are working in the professional. Karan, you just reminded me very one important point that on the one side. We all are on the one side. We are arguing about that only. We are all in one side that we have to convince them. If we believe that there is in any work there will be some mistakes. If we will attempt any mistakes, if we will then he can lose his temper very easily. So that is the also matter. We can't say that we are perfect. We make some problems, mistakes. So I think that should be also considered our point. We have to identify what are the reasons why he is getting angry. What are the reasons? Why this is what I am telling that because we also have to find out the scenarios in which is getting short temper. See, I think going to the upper management cannot be a solution, because even if the upper management takes some decision, he is going to be my boss ultimately. He is going to be my boss, and that is going to ruin the relationship even more if we know that we have gone to upper management and complained about him. Isn't it? Definitely, so, but main thing is that in the worst case scenario, we have to give our best. Meet the deadlines. We should do the timelines and just think this way. If they are not convinced by us, if there is a problem related to the boss, then what will we do?
So At the same time, we are- after that, so the saying worst what case I'm scenario saying. will be, Rahul. So the After worst that, case there is scenario a- will be that we should go to the upper management. Because we are working in the professional environment, and we we like will if we are go. completing Yeah, a you're work right. on a given deadline, so then also our boss is losing his temper, then we should go to the upper management if it is No, the Karan, worst case after scenario. that we can But reach direct- to the boss. But it is Karan, because after that we can discuss with the boss that he is losing his temper very easily, so that Yeah, he can because change. We then have to it's give very one chance to clear. the boss. Yeah, then it is very clear that I'm he's talking at about the the worst you know case he is scenario. the one We who are is not talking like responsible. we He is the one directly. who is at fault right Yes, now. yeah, Karan. At After that that, point, after that we can reach to the we higher have to authority. discuss. Yes, like Yes, if yes, he yes. loses the temper, if we are completing our work on the given deadline, then also if it is yes, like some yes. personal problem, then we can confront him. If then also he is losing a temper, then we Yes. should go to the higher authority, because we are Yes, working in a professional then it is environment. Now I am Because directly it agreeing with you. because Completely agreeing with it you. is very clear to everyone in the office that he is the one who is at fault. yes, Then Yes, he can't yes. blame because us and he can be because reprehensive on in us, you know. We should it declare because it makes mistakes. because the environment for the working should be also be like comfortable for the others, like Yes, other people exactly. should also be Yes, yes, yes. comfortable in working in that. Exactly. So and if the boss is good, and if the boss is right, if he doesn't lose his temper, then automatically the performance of the other employees will be good. Will be So reduced. like he will be. But yes, if in the worst case scenario, if the boss is like losing his temper, then we have no other option than to go Okay, to we will against him. Yes, we yes, can yes. arrange a We can meeting go. like But that will be an Then extreme arrange a case. That book will be an review. extreme case, you know. Let We should also me keep that put in a mind. point. Let me put a point. Yes, but Karan, you Yeah, can we see can it this also- way that even though There are so many- we can there reach are to the so higher many good books. authority and ask about our problem, and he changed the boss. But what the surety that the next boss came is good? Yes, There is also this very, very That's legitimate why point made by before you. going to the top management, we have We to have to discuss come this as with common higher solutions. Rahul, we have to come up common solutions. Like one solution I am giving you that there are so many good books. So on good books, we can make up PPT and we can present in front of all employees and in front of the boss. And we can discuss like how to reduce our easily tempered. See, in this Anand, way we can. Anand, this is not a possible or this is not not possible, possible Anand. thing, Okay, because Solution if of our I'm not problem. comfortable with that, if some Anand, this is not a solution of our problem or solution of our so problem. Anand, your he point is can good. Anand, your point is Listen, good, listen. but this is not the solution for that. Your point is very good. like, but it we can Rahul- change that. backfire also, Actually, like in it this can way we backfire can make also, a- like boss can Definitely. take it like it on its ego also, that this problem Yes, that yes, like yes, we are Karan. directly Yes, definitely, Karan. so Rahul, that I it think can first of all, backfire we have to also, like that we are among us. directly pointing will- out at him that he is having some bad trait. Okay, There now are I think so many good books. We Now- will okay, now I think we create can a good go for environment. we can go for conclusion now. So I give chance to Shravan. First, you please conclude. Yes, sir. Thank you, sir, for giving us such opportunity. So we have a good discussion, but we come out with the conclusion that first of all, we should not directly go to the top management. We should first talk with him. We can conduct a meeting with our colleagues that what is the solution of this that, because this is not a guarantee. Changing is not guaranteed. Solution is guaranteed. If we will come out with a good solution, that will be good. So now I open the further discussion with further conclusion with my friends. Thank you. Okay, Apurv. So I think the task started in a crowded way, but then ultimately it reached to a conclusion. So I think it is a good point for our discussion. Coming to the solutions that we have discussed so far, are that I think unanimously we agreed that we should first of all, since he is our boss, we should first of all go to him and ask him what is the reason behind his loose temperness. Because that will be beneficial for him also, and and for us also, because it will give a solution and won't exaggerate the problem with upper management. Also, we talked that just a second. Also we talked that the environment is professional. So we should also try on our employee level
that we should keep up with the deadlines and do our work judiciously, so that there is no reason for him to lose his temper, right? And if at all the things fail and we need to go to the upper management, then in that case, that has to be taken, that step has to be taken very, very seriously. I mean, it should be very carefully, we have to take that step, because the next boss who is going to come, as mentioned by Rahul, we don't know what's going to how he is going to be and how he is going to treat us. Because as we mentioned today, the current boss which we have right now is a good person. There are chances that he changes his behavior if we try to talk to him and maintain relations with. So yeah, I think these are the solutions that we have discussed so far, and it was a good discussion. Thank you very much. Rahul? On behalf of my team, I want to conclude that, as the Apoorv said, first we have to discuss what the problem is. It's from the boss side or from the employee side. After that, after discussing with our employee what the problem is, then we can try to convince them. First, we can try to convince the employee, even though if they are not convinced by that also, then as the Karan said, we can go to the boss and discuss the problem with the boss, that this is the problem regarding the loose temper of their loose temper, so that we can give one chance to our boss. So after that also, even the condition is boss, then we can go to higher authority. We don't have any solution for that. So thank you. Okay, now Subesh. After discussing the issue with the team members, we reached to the conclusion that first of all, we have to convince the subordinates to not go to top management directly, and discuss the issue with the boss, and try to convince them what are the effects of his short tempers on the subordinates. And just a second. And also we have to try to find out the situation when he loses his temper and try to improve those situations. But in extreme case, we have to go through top management if it's not working. These are the few solutions. Thank you. Okay, Karan. So we have a very fruitful discussion. So the solution will be that, like everyone is saying, that we should not directly go to the upper management. So that is the one solution. And second one is that we should directly confront him and ask him whether the problem is on his level or our level. And thirdly is that if we, like Apoorv said, if we are working up, if we are delivering our work on a given time, so there might be not a reason that he might lose his temper. But then also, if he's losing his temper, like in the worst case scenario, then we should go to the upper management, and it should be done in a very effectively and a careful way, so that it doesn't ruin the relationship. And thirdly, lastly, I would say that going directly to the upper management will cost us also, because like it can ruin the relationship between boss and the employee. So these are the solution up to which we have reached. So thank you from my side. Okay, Rahul. Done. Okay, Amok. Was very good discussion, and I am happy to conclude on behalf of my team. So everyone was agree on that we should not directly go to the top management. We should go with boss and talk to make the friendship relations with him and discuss the issue, and everyone was agree on that. And after that, if it will not be sorted out, then we can try our best. How can it will be solved? We can decrease our problems, our mistakes, so that he should not lose his temper. But after that, in the end, if it can't be the solution, then we should go. I think that to the top management. And thank you. I'm concluding here. Anand. So here we have come in the conclusion part, and I got the opportunity to conclude this discussion. So in the discussion was many solutions has come, many points has come. So initially we were starting we will get to know why he is getting tempered. So we will get to know, we are all convinced with that. We want to know the reasons why he's getting the temper. So because we cannot judge easily
and the person and we will if we have the better relations, then we can make a better environment, work environment, and the so in this way we have get to know about him, that what is the regions, and we will discuss him. We will make a get together and we will discuss personal level that what are the regions, and after getting to know that he's still having making that in that environment, so we will we can go for the higher top management. That's from my side. Okay, Ravi. Okay, friends. On the behalf of team, I conclude the task. Friends, we can all agree on the one point that we are not go to directly with the top management on the best boss, but we can other type of the solutions. There are two levels we go on that. We talk to the subordinate. What the situation and what a problem going on, and understand the situation and convince this subordinate about the boss is a good, and he cannot do this without a reason, and we can found about a reason at what level the problem he is facing, and why his behavior is changed according and easily get tempered. And second, we go to the boss directly and find that problem and discuss what type of problem at a personal level and at a professional level. Talk to the boss, and according to this, we can talk to the boss and find the adjust the solution to the problem and minimize the problem. That's all about from us. Okay, so I believe everybody has talked, huh? Everybody has spoken. Yes, sir. Okay. So see, the question was your boss is a good person, and but he loses the temper. Okay, what do you understand? What do you think? Is boss harmful for the organization or not? Yes, sir, he is. Definitely Is harmful? No, sir. for the Not harmful. no, sir. Generally speaking, he is There harmful. is two scenarios, sir. It can be harmful also, it cannot be harmful. मतलब जहाँ वो हम लोग को criticize करते हैं कि यार तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, तो इन दिस में क्या होगा ना कि और कुछ अच्छा हम लोग improve करके अच्छे solutions भी निकाल सकते हैं, और अच्छे से grow कर सकते हैं खुद को भी, organization को भी. दूसरा है एक तरह से हार्मफुल भी है, क्योंकि ये माइंड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है. इससे क्या हुआ कि अगर जहाँ हम 8 घंटे काम करके घर पहुंचते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो काम का टेंशन रहेगा, ऊपर से घर में जाकर के अपना जो माथे पर जो बोझ है वो किसी और में जाकर उतार सकते हैं. So sometimes harmful also, not harmful. Okay, so I give you another boss who does not lose temper at all, but he is not a good person. So that is, sir, this is not a good for organization because Definitely we are so good. दूसरा ले आते हैं ना What type temper. of person? What type of person? चुपचाप आराम से रहेगा, लेकिन he will, he will be dangerous for you. अच्छा. तो आपको वो भी बोलना है ना, The top management. good person and does not lose his temper easily. तो अब सारा कुछ तो नहीं मिलता Sir, कहीं. वो आइडियल बन जाएगा सर. You don't get everything. तो वही ना, टेम्पर यूज करना तो बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें क्या है, आप जब काम कर रहे हो और कोई आप पे चीखे चिल्ला है ना बेवजह, तो फिर आप उसमें जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लूज कर देते हो ज्यादातर. आदमी उसी में टेंशन में रहता है, कोई कौन उनको सुना दिया इतना काम अगर भी कर गलत रहे ना हो हो. जाए. अच्छा, अब ये सोचो, चलो ठीक है, वो ठीक सर समझ गए. अगर वो बॉस की पोजीशन पे हमें पढ़ना सेकंड सिनेरियो सर का बहुत अच्छा है. यूज करेंगे. अभी क्या है, टीम अभी तुम सारे सबऑर्डिनेट तुम्हारे पास आए और बोलते हैं चलो भाई टॉप मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं हम, चलो. तो तुम उनको क्या बोलोगे यार? क्या एक्चुअल में बताओ क्या बोलोगे? 20-30 लोग आ गए और तुम्हारे कैबिन के पास खड़े हो गए, बोले चलो आज जा रहे हैं, डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं आज हम, टॉप मैनेजमेंट से. क्या बोलोगे तुम? हम तो सर यही बोलेंगे, तुम ही जाओ, मैं नहीं जाने वाला. कर्ण बोलता तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला. नहीं बोल पाएंगे. मैं तो चला जाऊंगा. मेरी प्रमोशन रुक जाएगी सर. ऐसा थोड़ी रहा. सर इतना इजीली नहीं सोच के जाना दाओ, सोच के दाओ, अभी कोई बॉस डिस्कशन को नहीं हो निकाल दिया तो. लोग आगे अब बोल रहे हैं चलो भाई चलो चलना सर है. मैं चला जाऊंगा, पर अगर जब पहली बात हम लोग उनको प्रश्न, अगर हम उनको पर्सनली लेवल पे जानते हैं कि हाँ ये ऐसे हैं, तो ठीक है ना, हम भी बहती गंगा में हाथ धोते.
मतलब कि सर, ठीक है, problem भीड़ के तो साथ हम भी सुनिए चले सर। जाएंगे, सर, चलो हुआ क्या? करते हैं। नहीं होता तुम अगर भी जहाँ कंप्लीट कर लोगे। हाँ अगर जब अच्छा, आप में से personal किसी ने level पे आप में से किसी ने बोला कि टॉप मैनेजमेंट के पास जाके हमने क्या बोलना है? एक प्रोबेबिलिटी तो ये भी है ना कि टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे सब लोग, रुकेंगे तो नहीं हाँ, तुम्हारे हाँ। कहने से। इनफैक्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो वही है कि टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे। क्या लगता है तुम्हें? हाँ सर, जा सर वो तो प्रॉब्लम तुम्हारे स्टेटमेंट में दे तुम्हारे ही रखा कहने है ना से कि वो कंप्लेन तुम्हारे करने जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे कहने से रुकेंगे तो नहीं, क्या लगता है तुम्हें रुक जाएंगे? क्या पता रुक जाए। नहीं सर, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ट्राई क्या कर है? सकते हैं सर। नहीं प्रैक्टिकली सोचो यार, Try- ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है? सर ज्यादा प्रोबेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट के पास जाने की ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी तो ये है कि वो जाएंगे, तुम्हें ले, ये तुम बोलोगे जाएंगे। चलता हूँ या तुम बोलोगे नहीं चलता हूँ, चल। दोनों केसेस में वो तो जाएंगे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है। एग्री और नॉट? यही क्योंकि सर 20 बंदों को समझाना ही तो मुश्किल होता है सर उस टाइम। हाँ, और 20 से ज्यादा ही होंगे, बहुत ज्यादा लोग होंगे यार, बड़ी कंपनी है। यस सर। हाँ, अंडरस्टैंड? चलो मान लिया। तो अगर आप में से किसी ने ये तो नहीं बोला कि टॉप मैनेजमेंट पे जाके बोलना क्या है, अगर तुम इनकार करते हो कि मैं नहीं जाऊंगा, तब पंगा पड़ेगा। यस सर। पंगा हम ये तो पड़ेगा। convince करेंगे ना। हाँ, क्या बोलोगे तुम उनको? करण क्या बोलोगे? सर मैं बोलूंगा कि साथ में चल दूंगा, पर कुछ बोलने वाला नहीं हूँ मैं, तो तो ये क्योंकि बोलने की भी जरूरत क्या है? वहां जाके कुछ मत बोलना, उनको बोलने तो की क्या सर जरूरत है? पीछे ही खड़ा हो जाएंगे सर, और हाँ क्या हाँ, तो उनको जैसे बोलो मत ना, उनको बोलने हाँ, की वो क्या जरूरत है, वैसे पीछे खड़े हो जाना। पीछे खड़े हो जाएंगे और हाँ हाँ ठीक है, बस। लेकिन ये डिस्कशन में तो नहीं बोल पाओगे। तो वो सर वो प्रैक्टिकली फिर वो हमने एथिकली वे में भी चलना पड़ेगा ना कि देख के। मैं तो पूछ रहा हूँ यार कि ज्यादा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि तुम सर, एक्चुअल में क्या करते हो। प्रैक्टिकल तो सर, यही है पहली कि बात हम कन्विंस करना इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो 20-40 लोगों को कन्विंस करके वो जाएंगे, तो जिनको प्रॉब्लम है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनको कन्विंस करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बाद में ये होगा कि वो उसका बैकफायर हम पे हो सकता है। ठीक है, अगर बाद में अपर मैनेजमेंट ने बॉस चेंज कर दिया या कुछ और कर दिया, फिर बाद में हमें काम तो उनके साथ ही करना पड़ेगा, तो फिर बाद में हमारे पे बैकफायर हो जाएगा। तो मेन तो यही है कि हमें उनके साथ जाना चाहिए। देखिए जाना चाहिए, लेकिन पूरा टॉप मैनेजमेंट के पास डायरेक्ट नहीं चला जाना चाहिए। मतलब कि जो बॉस का जो बॉस है ना, पहले उनसे जाके उसके पास जाना चाहिए। सीधा बाईपास नहीं कर सकते कि अच्छा, हाँ तुम्हें डायरेक्ट क्या चले लगता है गए। कि आप बॉस के पास गए नहीं होंगे पहले, कि गए होंगे? गए होंगे तभी तो जैसे आपने assumption लगा ली है कि भाई बॉस डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाना है, पहले बॉस से बात करनी चाहिए, तो क्या पता बात कर रखी हो उन्होंने, वो भी तो इमीडिएटली नहीं जा रहे होंगे सारे। सर, ये एज्यूम कैसे कर सकते हैं सर? नहीं, अज्यूम नहीं करने को बोल रहा हूँ, अज्यूम नहीं करने को, बात करते टाइम उस तरीके से बोलने के लिए बोल रहा हूँ। सुनो आप कैसे बोल सकते थे। द मोमेंट these subordinates approach me, I have couple of options. Number one, I need to discuss with them. Have they talked to that fellow boss? Have they discussed with the boss? If no, we must discuss with him. Point number two, have they talked to the boss of the boss, immediate boss? If answer is no, we should talk to him. But if they have exhausted all these two options, then obviously the only option left is top management, and I cannot stop them. In that case, I will join them. I will join them not for complaining the boss. In that case, I will take my own call. I also have my own opinion. If my opinion is that person is good, but he loses the temper because of some reasons, that is a human problem, and everybody has that problem. And I'm going to tell the same thing to the top management. I'm not going to join the views of everyone. I'm going to air my own views there. If he's the right person and he loses the temper, which even I lose sometime, everybody loses sometime, but he's asset for the organization, we must tell that. If he's dangerous for the organization, we must tell that also. So friends, it is like this. When I'm approached by subordinates, I will spare some moment. I will request them to listen to my points. My first point will be, have you talked to the boss? Is he really dangerous? What do you think? Or it is only ego issue? Let's not take personal issues in between. Let's talk from the organizational perspective. Is that fellow good for organization? आर्मी में क्या होता है यार, आर्मी में तो बॉस तुम्हारे ऊपर चिल्लाता ही है, गाली भी देता है, लेकिन कंट्री के लिए तो ठीक है। कर्नल साहब बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन कंट्री के लिए ठीक कर रहे हैं, तो कर्नल साहब के अगेंस्ट तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो कंट्री के लिए ठीक कर रहा है। तो अगर तुम्हारा बॉस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है,
तो उसके थोड़े से टेम्परामेंट, उसके थोड़े से टेंट्रम्स टॉलरेट करने पड़ेंगे। वो सब जगह होता है, वो तुम्हारे में भी है। सो इन दैट केस my first point will be, I will discuss with the subordinates here, don't you think he is good for organization, and the temperament which he is throwing we also throw sometime, is it within the tolerance limit or has he crossed the limit? If it is within the limit, then I will try to convince them कि यार I think we are doing excess, we should not do. Suppose he has done the excess which we don't know, he has crossed the limit. The second point will be, let's talk to the boss of the boss, immediate boss, because the hierarchy says that we will not cross the hierarchy. Yes, there is always organizational structure which we should not cross. We'll go to him. Suppose that option is also exhausted, the only option left is top management. Then if I do not go with them, I will not be fulfilling my responsibilities, either for subordinates or for the boss, because I must tell honestly what is my opinion in front of top management. ये तुम बोल रहे हो कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ये क्या है यार, ये थोड़ी होता है, ये नहीं करना है। नहीं जाऊंगा उससे क्या होगा, नहीं जाऊंगा उससे क्या होगा, उससे ये लगेगा कि तुम्हारे में ग्रुप एम्बेडेडनेस नहीं है। क्या पता जो जितने लोग इकट्ठे हुए सही काम के लिए जा रहे हैं, सही कॉज के लिए जा रहे हैं, सच में ही वो बहुत ही गलत आदमी हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके टेंट्रम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत गलत हो, उसका टेम्परामेंट होना, उसका टेम्पर लूज कर देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ही इज थ्रोइंग टेंट्रम्स, ही इज लूजिंग टेम्पर, हाउ इट इज अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आस्क योरसेल्फ कि ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई नुकसान नहीं है यार, तो फिर किसको नुकसान है? यार किसी को गाली देता है, वो आदमी को हर्ट कर जाती है बात, उस आदमी को बात हर्ट कर जाती है, देन व्हाट? अगर हर्ट कर जाती है तो उसको सोचने का तरीका कुछ अलग है कि यार क्या हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं क्या, या क्या किसी और तरीके से कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए इज गुड, डिपार्टमेंट के लिए इज गुड, वी शुड नॉट लूज हिम, बिकॉज इफ वी लूज हिम फ्रॉम द डिपार्टमेंट, then we lose asset from the department. मैं तुम्हें अपना एक एग्जांपल देता हूं। when I was doing my doctorate from IIT Delhi, there was one lab. उस लैब का जो असिस्टेंट था वहां पे लैब का, he was very very arrogant fellow, very very arrogant fellow। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा तुम जाओगे और गाली वाली ना दे दे, कभी नहीं होता था। फिर my guide asked me, he said, you know him? Because this video will be aired on YouTube, I don't want to name anybody. He said, do you know he is going to abuse? And मैं PhD में था, you see, BTech MTech तो छोड़ ही दो, PhD वालों को गाली डायरेक्ट। PhD people can be faculty sometime in the same department, so is to उसको हैंडल करने का एक ही तरीका था, उसके टेंट्रम सुनो, कुछ मत बोलो, फिर ह्यूमरस तरीके से, you know, then what I said, इग्नोर करोगे तो और पीछे पड़ेगा। You are right. नहीं वो भी नहीं, उसकी गाली सुनी, फिर मैंने बोला यार, हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूं, मैंने बोला यार सुनील जी क्या एक ही गाली देते हो क्या यार, आज कुछ नहीं दो ना यार, मतलब सुन पक गया मैं एक ही गाली सुन के, सर कोई नई गाली दो ना सर आज। उसको चाय पे ले गए, बाहर चले गए, फ्रेंडशिप डेवलप किया, उसके बाद उसने मेरे को गाली देना कम कर दिया, आई टेल यू ऑनेस्टली। यही चीज मैंने रखा। और जब भी वो गाली देता था मैं उसको ये बोलता था, यार सुनील जी यार ये नहीं, मजा नहीं आया आज उस गाली में यार, जो कल दी थी ना यार वो ज्यादा भारी थी, आज मजा नहीं आया यार, थोड़ी हल्की सी गाली दे दी आज आपने। तो देन ही स्टार्टेड बिकमिंग योर फ्रेंडली। यू कैन विन एवरीबॉडी, आई टेल यू, यू नीड टू सी व्हाई दैट इज हैपनिंग। सो वो चीज भी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन। आप में से कईयों ने बोला कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई ही इज थ्रोइंग द टेम्पर। मे बी उसकी फैमिली डिस्टर्ब्ड है या कुछ ऐसा है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव दैट इश्यूज। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो ये था कि फर्स्ट आई विल डिस्कस विद ऑल द सबऑर्डिनेट्स दैट हैव वी एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ही असेट और लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट? मे बी के हिज बिहेवियर इज नॉट गुड बट अदरवाइज इज वेरी गुड फॉर asset. We should not lose him. We should not advise top management to replace him. If we go to top management, क्या करने जा रहे हो top management में तुम?
क्या ये बोलने जा रहे हो क्या उसको रिप्लेस कर दो? ये तुम जो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करोगे तो उनको ये बोलोगे कि वी वांट दिस फेलो, बट सर वी आर रियली इरिटेटेड विद हिज बिहेवियर नाउ। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी? सोचो, तुम एमडी हो, अब तुम क्या करोगे? तुम उसको ये बुलाओगे और बोलोगे देखो कंप्लेंट आया तुम्हारा, कंप्लेंट में ये नहीं बोला कि तुम्हें हटा दो, कंप्लेंट में ये बोला गया है कि तुम अपना टेम्पर लूज करना थोड़ा कंट्रोल करो, क्या प्रॉब्लम है बताओ, व्हाट इज द इशू? तो आप टॉप मैनेजमेंट पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाओ, लेकिन बोलोगे क्या भाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले होमवर्क करके जाओ। होमवर्क में ये आता है कि मेरे को पता होना चाहिए कि वो आदमी का टेम्पर लूज होने का रीजन क्या है और वो असेट है कि लायबिलिटी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पर लूज करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। यू नीड टू अडेप्ट टू इट, एडजस्ट टू इट, एंड यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस इट। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको वो लोग मिलेंगे, आपके बॉस ऐसे मिलेंगे जो टेम्पर लूज करेंगे। यू नीड टू हैंडल इट। अब आप लोगों ने मैं आपको फीडबैक देता हूँ। श्रवण आपका सर थोड़ा सा मेरा फीडबैक थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, ये उस दोस्त का बर्थडे आज। अरे क्या बात है, तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है ना? नहीं दोस्त का बर्थडे, वही जाना है नीचे। अदरवाइज यार पार्टी वार्टी मांग लेने थे, हम तो पार्टी मांग लेते थे तुमसे। हाँ सर, मेरा जरूर दे देंगे। आनंद, तुम्हारा शुरू में तुमने बोला एनवायरनमेंट शुड बी नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन वर्ड गलत है, तुम इंग्लिश के गलत वर्ड यूज नहीं करने। तुमने बोला कि व्हाई ही इज लूजिंग टेम्पर, ये अच्छा पॉइंट था तुम्हारा। लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा नेगेटिव फीडबैक है, जब तुम डिस्कशन करते हो तो ऐसा लगता है अग्रेशन कर रहे हो, असर्टिव नहीं लगते, अग्रेसिव लगते हो, ऐसा लगता है लड़ रहे हो। वो नहीं करना। डिस्कशन करते टाइम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को इस तरीके से रखो कि वो अग्रेशन ना लगे। इट शुड नॉट लुक लाइक अग्रेशन, इट शुड लुक लाइक यू आर असर्टिव, स्पीकिंग योर पॉइंट, smiling, talking to others, stopping someone sometime between, supporting others, not fighting with others. At one point of time, it was looking like entire house and you are fighting. वो सुनना तुम जब YouTube पे चढ़ेगा कि सारा हाउस लड़ाई कर रहा है, वो नहीं लगना चाहिए। वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा फीडबैक है नेगेटिव, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ आनंद, पहले भी 2-3 बातों में। तुम्हारा अभी बोलने का बढ़ गया है, पहले तुम बोल नहीं रहे थे बिल्कुल, ये बोलने का तुम्हारा ठीक हो गया, दैट इज गुड थिंग। तो दैट इज नॉट अ ट्रबल फॉर दैट। बाकी ये पॉइंट तुमने अच्छा बोला था बीच में, जो टेम्पर क्यों लूज कर रहा है वो था। इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं थी, बीच में तुमने काफी पार्टिसिपेट किया, बीच में इनफैक्ट तुमने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें बस अग्रेशन एक काम बिगाड़ गया तुम्हारा। और कंक्लूजन ये तुम पीपीटी गुड बुक्स, ये क्या बातें कर रहे थे यार, एक गुड बुक्स में पीपीटी बनाएंगे। अभी मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ना हर एक वीक में एक अच्छे एक एम्प्लॉय जो है एक गुड बुक्स मिलता है, उसको पढ़ करके पीपीटी प्रेजेंट करता है, सब लोग ज्वाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा मैसेज आता है सबके माइंड, तो एक बुक का पूरा समरी चला जाता है। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी गुड बुक्स, तो हम लोग इस तरह से लग करके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो मेरा था। लेकिन वहां जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, तुम्हारे कमरे के बाद 20 लोग खड़े हैं, उनको पीपीटी कैसे दिखाओगे? सर ये जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पीपीटी वहां नहीं ना चलेगी यार, पीपीटी वहां नहीं चलेगी। तुम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचना है, प्रैक्टिकल इशू है वहां पे। 20 लोग बाहर खड़े हैं तुम्हारे, बोल रहे हैं चलो, तो बोलेगा रुको यार पीपीटी देख के चलते हैं। नहीं उस टाइम की बात नहीं, ये पीपीटी दिखाओगे किसको? पीपीटी किसको दिखाओगे? उस टाइम तो नहीं दिखा पाएंगे। नहीं, अदरवाइज किसको दिखाओगे? बॉस को? नहीं एक जितने भी एम्प्लॉय है सब लोग रहेंगे। एम्प्लॉइज यार, टेम्पर तो कुछ बॉस लूज कर रहा है ना वो। मैं तुम्हें गाली वाली दे दी यार, कितनी भी पीपीटी देख लो तुम कितनी भी पीपीटी देख लो, 1-2 बार गाली सुनूंगा फिर तुम भी गाली दोगे। तो ये मेरे को प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं लगा। मैं वो मैं ट्राई कर रहा था कि यार क्या बोल रहा है, कुछ काम क्या बोल क्या रहा है तू। पीपीटी गुड बुक्स मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी। मेरे को लगा हाँ यार कुछ मोटिवेशनल, कुछ अच्छी चीज सिखाने की बात कर रहा है। वो देख चलता है, वो होती है चीज, लेकिन उसका ना वो रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में जब तुम जाते हो तो बॉस गाली देता है, और बस क्वेश्चन ये है कि उस गाली के बाद तुमने करना क्या है। ये क्वेश्चन था बस, कि बॉस ने तो गाली देनी है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें नहीं मिलेगी जहां तुम्हारा बॉस तुम्हें गाली नहीं देगा, वो देगा गाली। अब उसके बाद हुआ क्या कि गाली उसने मेरे ख्याल से ज्यादा दे दी, एक ग्रुप बन गया, और ग्रुप जो है तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा है कि चल भाई चलते हैं, अब तू बता क्या करना है। क्वेश्चन ये था, बाकी तुम अपने आप से पूछ लो, जो तुम बता रहे हो सब लोग क्या क्या बोल रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। और प्रैक्टिकल पॉइंट है, टॉप मैनेजमेंट के पास जाना भी पड़ता है, कई बार टॉप मैनेजमेंट के जाना ही पड़ता है। और तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ काम की,
अब ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैंने DRD ज्वाइन किया था, आई वाज सीन जूनियर मोस्ट साइंटिस्ट, सबसे जूनियर, और 50 लोग इकट्ठे हो गए एक साइंटिस्ट जी के अगेंस्ट, डायरेक्टर के पास चले गए और मेरे को उन्होंने बोला उठ चल। मैंने बोला कहाँ जाना है? बोले ये मत पूछ, चल। अब तू जूनियर है सबसे, तू जूनियर है, तू बोलते नहीं पहले मेरे को एक्सप्लेन करो पीपीटी के ऊपर कहाँ जाना है, तो यू कैन नॉट से दैट, चल उठ चलो। फिर मैं बोला ठीक है चलते हैं, फिर चले। फिर भाई साहब डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़े हो गए सारे, और मैंने पहली बार देखा कि मॉब मेंटेलिटी क्या होती है, मॉब मेंटेलिटी। तो सारे लोग खड़े हो गए। फिर डायरेक्टर भी बहुत तेज, उसने भी क्या बोला कि ओके यू टेल, पीछे सबसे पीछे मैं खड़ा, यू टेल व्हाट इज हैपनिंग। मैं सर नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज़ डायरेक्टर वाज नोइंग कि इसको कुछ पता नहीं है, ये बोलेगा इसको कुछ नहीं, मेरे को क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ही सेड व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। You know, director is very sharp. He asked me intentionally, okay, you tell what problem you are facing. I said, sir, I am facing no problem. Very comfortable. मस्त, सब ठीक चल रहा है. So ऐसा होता है, मतलब real world में these are the issues which come. तो तुम्हें जाना भी पड़ेगा. तुम ये नहीं बोल सकते भाई मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो सत्संग नहीं चलेगा. तुम्हें बड़े प्रैक्टिकल आंसर देना है कि भाई ऐसा हुआ, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं जाके लेकिन अपनी बात रख दूंगा. वहां पे जो अपनी बात रखनी होगी वो तुम रख सकते हो, वहां पे जो पॉइंट तुमने रखना है. तो ये था आनंद, तो वो मेरे को तुम्हारा वो पॉइंट तो अच्छा नहीं लगा यार, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी कम थी, राइट. ये जितने भी जीटी होंगे ना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी, ये जरूर सोचना कि व्हेन यू आर गिविंग आंसर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये जरूर सोचना तुम. दैट वाज योर फीडबैक. बी डोंट बी एग्रेसिव, राइट. करण, जो शुरू में लाइंस होती है ना बोलने वाली, वो तुमने बोली नहीं यार इंट्रोडक्शन में, वो लाइंस यूज नहीं की तुमने कि गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज दिस, ये वो जो 4-5 लाइनें सीखी हैं वो तुमने इंट्रोडक्शन में बोली नहीं. तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, जो टॉपिक से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बोला तुमने, अपना इंट्रोडक्शन किया और फिर सारी लाइंस यूज नहीं की तुमने. ओके. गोइंग टू टॉप मैनेजमेंट कैन नॉट बी गुड सॉल्यूशन. ये लाइन मेरे को नहीं लगा ठीक है. मेरे को लगता है कि गोइंग टू द टॉप मैनेजमेंट कैन बी अ सॉल्यूशन, डिपेंड्स के आप किस लेवल पे हो. गोइंग टू टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज इज वन ऑफ द ऑप्शन. सर मैंने ये बोला था कि डायरेक्टली गोइंग टू द, मतलब बिना उनको उनसे बात किए पहले बॉस से बोलना है, इसको क्लियरली बोलना है जो भी assumption कर रहे हो. Okay. How, don't assume you are directly going to top management. You say that first we have done it or not. That is how. Employee, boss, get together वगैरह का काम तो हो चुका है मेरे को लगता है. अब वो अगर आपके बाहर आ गए, आपको चल रहे हैं, तो get together बॉस के साथ हो चुका है. अब वो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास. That is what you have to say. And conclusion में तुमने सबका पॉइंट कंसिडर नहीं किया. You need to consider the point of everyone. Okay. अपूर्व की स्टार्टिंग अच्छी थी, और अपूर्व ने एक अच्छा पॉइंट दिया कि द पर्सन हु इज अप्रोचिंग मी, आई विल आस्क हिम के व्हाई, क्या हो गया भाई, क्यों जा रहे हो, क्या चक्कर है. तो ये पहली बात बनती है, तो उनसे पूछने की क्या हो गया, व्हाट इज द रीजन, कि यार मेरे को तो नहीं लगता इतना टेम्पर है. तो फर्स्ट यू शुड टॉक टू देम, देन यू शुड डिस्कस विद देम, हैव वी assume all the options are exhausted or not. तो मैंने सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट कर दी हैं कि नहीं. दैट इज द सेकंड थिंग वी हैव टू आस्क. फिर उसके बाद लेट्स गो टू बॉस एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड रीजंस क्या हैं. क्या रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल हैं या विद इन द कंट्रोल रीजंस हैं. मतलब ये देखना बहुत जरूरी है कि पानी सर से कितना ऊपर निकल चुका है, कि बॉस कितना डेंजरस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्या उसका जो टेम्पर लूज करना है वो बियॉन्ड कंट्रोल है, क्या वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है. वो चीजें असेसमेंट करना इज इंपॉर्टेंट. दैट इज अ पार्ट. बाकी कंक्लूजन वाज गुड अपूर्व, कंक्लूजन वाज गुड. बीच में तुम उतना ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन तुम बोल सकते थे, बोल सकते हो, एंटर कर सकते हो उसमें बीच में. एंड देन ग्रुप टास्क को जगह ज्यादा इंटरवीन करना सही नहीं रहेगा. नहीं, इंटरवीन तो करना है यार, उनको तो स्टीयर तो करना है ग्रुप को. जीडी एंड जीटी एज फार एज डिस्कशन इन बिटवीन इज कंसर्न, वो सेम होता है, अलग नहीं होता वो. ऐसा नहीं है कि जीटी में तुम भाई बंधु वो सारे तो बाकियों को बोलने दोगे, ऐसा नहीं है. बोलना तो तुम्हें है ही, हाँ सपोर्टिव वे में बोलना है. उसमें तुम अगेंस्ट अपोज रह सकते हो एंड तक, इसमें एंड तक अपोज नहीं रहना, मर्ज करनी है बात को, कन्वर्ज करना है पॉइंट्स को. बाकी अमोघ आपका यार फ्लो नहीं कर रहा था, कुछ फ्लो में ट्रबल आ रहा है, तुम्हारा डिस्कशन फ्लो नहीं करता. एंड सर हाँ यस अमोघ मेरा बोल रहे हैं यहाँ पे. अमोघ
I'm talking of Amog. Your discussion does not flow, and you gave a good point that first you should talk to the boss and then you should go to top management, but you don't presume it कि आपने boss से बात नहीं की है. Certainly you must have talked to the boss first and then only you are going to the top management. ऐसा rarely होगा कि तुम directly top management के पास जा रहे हो बिना boss के साथ बात किए. ये organization में नहीं होता. Organization में बात कर लेते हो तुम पहले, पक्का होता है वो, और यहीं से वो चेक भी कर रहा है तुम्हारा practicality. इसके थ्रू मैं क्या चेक करने की ट्राई कर रहा हूँ कि क्या तुम्हारे में कोलैबोरेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रैक्टिकलिटी है तुम्हारे अंदर, ग्रुप एम्बेडेडनेस. अगर तुम बोलते हो ना कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, वो भी सही नहीं है. या तुम बोलोगे हाँ मैं उनके साथ चला जाऊंगा और जो वो कर रहे हैं एग्री कर लूंगा, वो भी सही नहीं है. तुम्हारा अपना कुछ स्टैंड इज रिक्वायर्ड. योर स्टैंड इज रिक्वायर्ड. दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट इज वन थिंग you have to understand. And that is what Rahul now discuss it. You said you will discuss with them what is the problem. That is a good point. And why he is losing the temper, that is also good thing. Rahul ने starting में जो introduction दिया उसमें 2-3 points अच्छे बोले कि आप उनके साथ discuss करोगे कि problem है क्या, किस level तक है, gravity of the problem you will try to understand, depth of the problem you will try to understand, and then why he is losing the temper, what is the reason behind that also. So you will try to understand why he is losing temper, and he is losing the temper, how harmful that is for the organization and individuals. Suppose that is not harmful for the individual, it is only ego clash, it hurts somebody, so it is not a big deal यार, so it can be resolved. But अगर temper इतना lose हो जाता है, इतना गुस्सा करता है, मारने पीटने लग पड़ता है, तो obviously यार वो that is not good for organization. So first what is the problem you will try to understand, and then convince employee, you will go to the boss. So इस तरीके से this Rahul gave the points which are good points. That is how you told. Ravi, रवि तुम यार स्टार्टिंग बहुत अच्छा नहीं कर पाए आज भी. तुम कुछ बोला लेकिन बीच में ऐसा लगता है तुम बिल्कुल हट के बैठ गए हो, बिल्कुल आराम से, देखते भी नहीं हो किसी की तरफ, बस ऐसे आराम से अपनी कॉपी देखते रहते हो. बीच में देखना मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल मेडिटेशन कर रहे हो. नो सर, वो लिख रहा था कुछ. नहीं, लिखते हुए नजर नहीं आते. मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो बैठ के आराम से, कि हटाओ यार डिस्कशन करने दो बच्चों को, और इनको बात करने दो, कुछ बाद में सोचते हैं यार. तुम देखना ना अपना कमेंट भी आता है जब YouTube पे तुम्हारा वीडियो डलता है ना, तो कमेंट आता है कि व्हाट दिस गाय इज डूइंग. तो ऐसा लगता है कि रवि जो चुपचाप मेडिटेशन कर रहा है कि यार बच्चों को बोलने दो, इनको कोई मतलब नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बात चल रही है. तो बीच में एक्टिव रहना है यार रवि. एक्टिव में ये कि अगर तुमने नहीं भी बोलना है तो आई कॉन्टेक्ट जरूर मेंटेन करने हैं. आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो और नोडिंग करो. कोई हाँ कर रहा है ना कर रहा है, नोडिंग करो, बीच में हाँ ना तो करते रहो, कुछ कुछ तो बोलो उसमें. तुमने वो शेर नहीं ज्यादा नहीं बोला यार तुमने, मेरे को तो ध्यान कम आ रहा है, मतलब बीच में तुम बहुत ही कम बोल रहे थे. एक वो शेरो शायरी नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने, कोई भी अटेंड नहीं किया क्या शेरो शायरी वाला सेशन? उसमें जब कोई शेर बोला जाता है ना तो बीच में बोलते हैं मुकर्रर मुकर्रर ये वो, वाह वाह, वंस मोर अल्टीमेट यार, अल्टीमेट, वाह 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 वाह. तो बोला करो ना यार वाह वाह वगैरह, वही तो होता है इसमें. जैसे अपूर्व समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में नहीं आया फिर भी वाह वाह. हाँ समझ में ना भी आए तब भी ऐसे बोलते हैं नो 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 नो, यस यस, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू. जैसे राहुल बीच में बोलता है नाउ आई एग्री विद यू, नाउ आई एग्री विद यू, और पॉइंट वो वही बोल रहा था, पर पता नहीं राहुल नाउ आई एग्री विद यू अब क्यों एग्री हो गया, आई डोंट नो. लेकिन राहुल ने बोला नो नो नो, नाउ आई एग्री विद यू, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नाउ आई अंडरस्टूड, दैट इज ट्रू दैट इज ट्रू. चाहे कुछ समझ आए चाहे ना आए, भाई तुमने अपना काम करना है. ऐसे कुछ वर्ड्स सोचो जो बोलने हैं, जबरदस्त वाले, भारी वाले. एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू. अगर तू रवि पूरे डिस्कशन में, एक डिस्कशन में ऐसा करे यार, तू बस यही बोलता रहा बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद, ट्रू ट्रू एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, बस इतना बोल, कुछ मत बोल. और जब तेरे को लगे कि वो बात काम की बात बोल रहा है तो बस इतना बोल दे, ट्रू ट्रू, एग्री एग्री. या फिर इतना बोल दे, अपूर्व कैन यू रिपीट, अपूर्व कैन यू रिपीट, अपूर्व व्हाट डिड यू से, आई कुडंट हियर, अपूर्व कैन यू से. इतना ही बोलता रहा. मैं बता रहा हूं तब भी नंबर मिलेंगे, तब भी नंबर मिलेंगे, लेकिन नहीं बोलोगे तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे. अंडरस्टैंड? यू नो, in 8th class there was one of my friend, my closest friend, we were very close friend. The only difference was कि मेरे 100 में से 90+ नंबर आते थे और उसके 10 माइनस आते थे. That was the only difference, and that was a complimentary, you know, and I used to love him and he used to love me because of this only.
वो बोलता था यार तू इतने ज्यादा नंबर कैसे ले लेता है, मैं बोलता था यार तू इतने कम कैसे लेता है यार, और हम लोगों में बहुत पड़ती थी। अब उसने एक पेपर में ज्यादा ही ब्लंडर हो, फाइनल पेपर, और टीचर मेरा फेवरेट, आई वाज फेवरेट ऑफ दैट टीचर, क्योंकि जो 90 नंबर लेगा वो टीचर का फेवरेट होता है। तो उसने मेरे को बोला कि टीचर के पास चल, और यार मेरे नंबर बढ़वाने हैं। हम चले गए टीचर के पास, मैंने बोला कि ये इसके सर इसका ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो टीचर बोलता कि देख, प्रॉब्लम तो लाइफ में एक आधी बार की बात होती है, इसके तो हर पेपर में, हर साल, हर एग्जाम में इतने नंबर आते हैं, ये कोई एक बार की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऐसा ही है। पर फिर भी बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद बोलता ठीक है मैं देखता हूं कुछ क्या हो सकता है। अगले दिन उसने मेरे को बुलाया और उस लड़के को बुलाया, स्कूल के अंदर की बात, बोलता ये देख ये इसका पेपर है, और ऐसे दिखाया उसने, बोलता कुछ लिखा है इसके ऊपर, मैंने बोला कुछ भी नहीं लिखा है। बोलता यार अगर ना इसने, और वो पेपर था हिस्ट्री का, बोलता अगर इसने हिस्ट्री में ज्योग्राफी, संस्कृत, कुछ ना कुछ भी लिख दिया होता ना, मैं इसको नंबर दे देता, नंबर लिखा ही कुछ नहीं है यार, इसने पेज ही काला नहीं किया है। उस दिन एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि पेज काला करना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो यार रवि तू पेज काला करना स्टार्ट कर, जब तू मेडिटेशन में बैठता है ना तो तू पेज काला नहीं करता यार, तूने पेज काला कैसे करना है मैंने तेरे को बताया, वो वर्ड सीख ले कि यस यस राहुल यू आर राइट, राहुल यू आर राइट, ट्रू ट्रू, श्रवण व्हाई यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, श्रवण यू आल्सो पार्टिसिपेट, चाहे ऐसे ही बोलता रहे तू ऐसे बोलता रहे, ऐसे ही बोलता रहे, और उससे भी तू जीत जाएगा। और मैं बहुत से ऐसे, क्योंकि जीडी तो बहुत साल से करवा रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट कि वो दूसरों की टांग खींचते हैं, बस उन्होंने दूसरों की टांग खींचती है। हाउ कैन यू गो टू द बॉस, यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द बॉस, डू यू थिंक यू कैन डायरेक्टली गो टू द बॉस, इट इज नॉट पॉसिबल, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। तो जब तुम ऐसा बोलोगे तो सारा ग्रुप तुम्हारी तरफ आ जाएगा, सारा ग्रुप तुम्हारी तरफ लपड़ेगा बोलने, उनको लगेगा कि जब तूने किसी की टांग खींची तो तूने उसके ईगो पे अटैक किया। नेक्स्ट जीडी में करके देखना रवि, तो कुछ मत बोलना यार जीडी तो हम डेली करते हैं ना, मजे तो लो किसी दिन, तू क्या कर रवि किसी दिन बस टांग खींच बस, और जिसकी दिल आए टांग खींच तू श्रवण को बोल कि श्रवण व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, व्हाई डोंट यू से एनीथिंग, श्रवण ऐसा बोल, राइट। और राहुल को बोल कि राहुल यू आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग यार, गिव चांस टू अदर्स, बस ऐसा बोल तू, मजे ले बस रवि। लेकिन बिलीव मी एट द एंड तेरे को 10 में से 8 नंबर मिल जाएंगे, तूने चाहे कुछ बोला चाहे ना बोला, जो ऑब्जर्वर होगा उसको तू बहुत पसंद आएगा, ऑब्जर्वर को लगेगा यार ये है मेरा बंदा, इसने पूरा माहौल गरमाया हुआ है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट हाउ इट इज टू बी डन, यू अंडरस्टूड। सो अगली बार जीडी जब होगा तो भाई पेज काले करने, मेडिटेशन में नहीं बैठना है रवि, गड़बड़ हो जाएगी। यस तो my feedback pending. नहीं तेरी फीडबैक तो दे दी, अब रवि देखना अगले जीडी में तेरे को पूरा जो है श्रवण तेरा फीडबैक ये था, मैंने तेरे को बताया तो था कि आपका शुरू में आपने बोलना स्टार्ट किया पेशेंस, कूल डाउन, यू हैव टू सिट विद हिम, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एक्चुअली आप ना इंट्रोडक्शन में यू स्टार्ट गिविंग द सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन में यू आर नॉट टू गिव सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन में यू हैव टू गिव डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या थी इस टॉपिक की, इस टॉपिक का डायरेक्शन था कि you see you need to understand this problem first. There are 2-3 things you need to understand in the beginning. Number 1, is his temperament problem for organization, and if it is problem, to what extent, or it is mere interpersonal problems. Second, have we talked to him? Number 1. Number 2, have we talked to the boss of him? Number 3, if these 2 options are over, then once we go to top management, what we are going to say? I think friends we should discuss on these lines. तो यार ये पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी है ना, पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी है कि तुम बात क्या करना चाहते हो, किस लाइन पे बात करना चाहते हो, ये पर्सपेक्टिव किसी ने भी नहीं दिया। You need to give this perspective कि इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये डेंजरस है कि नहीं है डेंजरस, और डेंजरस हो किस लेवल तक। नंबर 2, क्या तुम इससे बात कर चुके हो, क्या इसके बॉस से बात कर चुके हो, कर चुके तो चलो टॉप मैनेजमेंट के पास, लेकिन बोलना क्या है वहां पे, उनको बोलना क्या टॉप मैनेजमेंट को, तो उस डायरेक्शन में यू हैव टू थिंक। ये प्रैक्टिकली यही है बात, प्रॉब्लम जो मैंने तेरे को सोचा है। बाकी इंट्रोडक्शन कैसा था, इंट्रोडक्शन सही था, बोलने का तरीका सही है, लेकिन क्या है कि तुम उसको पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे हो, तुम सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन के अंदर तुमने, कि तुमने बोला पेशेंस रखो, कूल डाउन हो जा, उन बंदों को बता रहे हो तुम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता यार, तुम क्यों बोल रहे हो कि पेशेंस नहीं रख रहे हैं, क्या पता बड़े पेशेंस के साथ चले हुए,
वो बड़े आराम से आए, तो तुम्हारा हंसते हंसते आए तुम्हारे पास कि चलो आज उसकी हमने जो है रेल बनानी है बॉस की, चल यार चलते हैं, आज मुर्गा बनाना है उसका, चलते हैं। वो बड़े हंस के, यार तुम उसको बोला कूल हो जाओ, बोलेगा मैं कूल ही हूँ भाई, क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल कूल चल रहा हूँ, तू भी कूल कूल चल मेरे साथ। तो वो जो बंदे आए हैं वो गुस्से में नहीं आए हैं, वो बड़े प्यार से आए हैं, वो तेरे को लेके चल रहे हैं कि चलो आज हमने बॉस, टेम्पर बॉस लूज कर रहा है, ये बंदे वो लूज नहीं कर रहे हैं, और तुम इन बंदों को कूल करने की ट्राई कर रहे हो जो ऑलरेडी कूल है। तुम कूल लिक्विड नाइट्रोजन डाल दो। श्रवण कूल किसको कर रहे थे, बॉस को या बंदों को? सर मैं बॉस को करने की कोशिश कर रहा था, वो बार-बार टेम्पर्ड हो जा रहे हैं। तुम बॉस को कर रहे थे क्या कूल? पक्का इंट्रोडक्शन तो टेम्पर्ड हो जाता है, इसलिए उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कूल रहो, टेम्पर्ड मत रहो। तो यार वो कोशिश तो उन्होंने भी कर ली होगी, तू क्या करेगा अभी जाके दोबारा? लगता नहीं तेरे को, सोच क्यों था? ये सारा तो हो चुका होगा यार पहले ही। नहीं, वो तेरे पास आए टॉप मैनेजमेंट क्या चलना है, तू बोलता ठहर यार मैं इसको कूल करके आता हूँ। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? नहीं होगा, तुम सोच के देखना इसका। अच्छा, बीच में तू भी रवि के साथ मेडिटेशन कर रहा था थोड़ी सी आज बीच में, बोल नहीं रहा था, तू ऑब्जर्व कर रहा था कि चलो इनको बोलने देते हैं यार, क्या बोल रहे हैं ये लोग। फिर तूने बोला कि तूने ना जब इंट्रोडक्शन किया, उस इंट्रोडक्शन में तूने श्रवण क्या कहते हैं सबके पॉइंट नहीं बोले। ओके, सबके पॉइंट आपने नहीं बोले आपने कंक्लूजन में। कंक्लूजन हैज टू बी ग्रुप कंक्लूजन। मैं सबको लेके सर, जैसे मतलब नेम लेना है, नाम लेना है। मेरे को सोच के बताओ कि जब डिस्कशन चल रहा होता है तो कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो कॉपी के ऊपर ये लिख रहे होते हैं कि बाकी उन्हें क्या बोला? तो थोड़ा मैं लिखता हूँ सर। हाँ, थोड़ा ही लिखना है, पूरी बायोडाटा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा बस। स्टार्टअप करते हैं, बस इतना सा लिखना कि अपूर्व ने ये लाइन बोली, आनंद ने ये लाइन बोली, रवि ने कुछ नहीं बोला, और कंक्लूजन में बोलना कि एवरीबॉडी हैज अ पॉइंट एक्सेप्ट रवि। जैसे वहाँ पे ग्रुप टास्क हुआ, सपोज जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हम नोटपैड लेके वहाँ पे लिख सकते हैं, तो नोटिंग। यस, नोटपैड होता है तुम्हारे पास? यस, होता है, परमिटेड। बिल्कुल, अदरवाइज कैसे करोगे डिस्कशन यार? जीडी में भी सेम, जीडी में भी। यस, एंड नोटपैड में कभी भी लाइन नहीं लिखनी, पॉइंट लिखना, पॉइंट, क्योंकि लाइन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तुम्हारे पास, ओनली पॉइंट। और जरूर लिखो यार, कंक्लूजन नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है तुम लोग लिखते नहीं हो, जो दूसरा बोल रहा है उसकी बात नहीं लिखते हो। कंक्लूजन तो यार बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो बोला वही तो बोलना है तुमने, और क्या करना है इसमें। और बाकी कौन से वाला जीटी अटेंड किया अभी आपने? कितने नंबर का जीटी अटेंड किया तुमने श्रवण? सर ये सेकंड नंबर है मेरा। सेकंड नहीं है तो, और जीडी मेरे ख्याल से तीसरी बार आए हो। जीडी फर्स्ट, एक जीडी हो चुका है मेरा, एक जीडी और 2 जीटी, राइट? तीसरा। तुम्हें पता तीनों में क्या चीज कॉमन थी तुम्हारी? तीनों में बताओ। ये जो तुम यार्निंग करते हो बीच में, जमाई लेते हो। थोड़ा सा टायर्ड रहता हूँ इसलिए। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छा है, उससे फीलिंग आनी चाहिए, ये जनता को पता लगना चाहिए भाई कि रात को जीडी हो रही है, कि विजेंद्र सर रात को भी जीडी लेते हैं, ये पता कैसे लगेगा? मैं तो किसी दिन ना जवाई सेशन करते हैं यार रवि, जवाई सेशन करते हैं रात को, कि सब लोग जवाइयां ले रहे हैं, फिर हम एंड में बोलेंगे यार रात को 12 बज गए यार, 12 बज गए, हम जीटी कर रहे हैं। समथिंग लाइक दैट वी कैन डू। चलो, एनीहाउ श्रवण बाकी सब ठीक था, बस उसमें थोड़ा सा करना है यार। ओके सर। Subesh, you said you will talk to boss politely, and you will ask your subordinate and ask the situation of and one more thing यार रवि, तुम टेम्पर को टेम्परेचर बोल गए थे गलती से इंट्रोडक्शन में। तुमने बोला था कि why he is losing his temperature, तो टेम्परेचर लूज नहीं कर रहा है भाई, वो बीमार मत करो इसको, वो टेम्पर एंड टेम्परेचर में डिफरेंस है, ऐसा ब्लंडर नहीं करना यार, क्योंकि उससे ना वो खराब हो जाता है, इमेज खराब हो जाती है बनी बनाई तुम्हारी। Subesh, you were talking to you said you will in the introduction you said you will talk to the boss politely and then ask subordinate and ask the situation of why this situation is coming that way, right? Yes sir. And then in extreme case only you will go to the top management, that is what you said. So I think you can participate, you have good grip on discussion, but the point is in between you are not entering the discussion part mein, you were not entering. Yes sir, not much. Why? So which part of India you are? Subesh, can you hear me? Subesh, I am audible? सर उसका फ्रीज हो गया है वीडियो, वो पंखा भी नहीं चल रहा। So I think Karan, तुम्हारा दे दिया मैंने फीडबैक? Yes sir, yes sir. यही है यार, बाकी जो बार बार मैं बोलता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स,
This all things will come with practice, lot of practice. The way you keep on discussing, you keep on learning. बस बोलना start करो यार. First is you have to speak. काम की बात बोलना वो बाद में आ जाएगा, लेकिन पहला बोलना स्टार्ट करो. Do not stop. Speak something. और वो बात करने करते एक आर्ट है स्पीकिंग का, बीच में नोडिंग करो, बीच में बोलो, वो चीज सीख लो बस. अगर वो आ गया, then you can hit it. You can do this. Fine. Anything else you want to ask? Fine. Chalo, then we'll have another session, maybe tomorrow something, and then we'll participate in GD now. Fine. Okay, sir. Hello. Yeah. Subesh, you back? Sir, my screen. You're back Sir, now? my screen is freezed. Yes, Okay. sir. Yes, sir. You're okay Now now? I'm okay. Yes, sir. Yes, I sir. was asking which part of India you are from? Sir, Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के हो? तो हिंदी Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. तो यार किसी भी मजाक पे तुम हंसे नहीं यार. मैं इतना मजाक किया, मेरे को तो लगा तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है. नहीं सर, आ रहा मेरे को सच में लगा तुम तमिलनाडु के हो यार, कि मैं मजाक कर रहा हूँ उसके साथ, श्रवण के साथ, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है बोल क्या रहा हूँ. नहीं सर. तो तुम हंसते ना यार, नहीं, मेरे सर. को पता कैसे सर, चलेगा. सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन सर उतना सही नहीं चल रहा है इसमें थोड़ा सा, इस वजह से सर मेरे स्क्रीन फ्रीज हो जाता. हाँ, तो बाकी सही था सुबेश, अच्छा बोला तुमने. मैं ये बोल रहा हूँ कि बीच में बोला करो, बीच में एंटर किया करो. फिर चला गया. चलो यार निकलते हैं. सुबेश भी चला गया, मैं इसको फीडबैक दे दूंगा बाद में. ओके. चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू. Good night, sir.